Everyone has a dream of improving lifestyle and living conditions by having better livelihood opportunity. These urge of humans generates exodus of population from rural to urban area, creating slums. The worst affected by poverty and lack of facilities are the women. For them, every day is a new struggle for survival. सब्जी भाजी नहीं आ सकती, गाड़ी वाला नहीं आ सकता है, दो इंसान नहीं जा सकते हैं उस गली से या कोई से भी गली से। गटर भी नहीं था तो सब लोग क्या करते थे, सब कूड़ा कचरा सब रोड पे, कोई कीचड़ हो जाता था, फिर मच्छर बहुत होते थे, यानी बीमारी भी आ जाती थी, सब लोग बीमार रहते थे। Mahila Housing Seva Trust is an organization working to improve the livelihood and environmental conditions of poor women in informal sectors. MHT believes that all citizens have a right of equal access to basic services and they have a right to be treated uniformly by services providers. Housing is always a major problem for poor, particularly women who are mostly self-employed, and for them their house is also their workplace. Uncertain land tenures of their home and constant threat of eviction adds to their vulnerability, destroys their investment and adversely affect their productivity. Healthy housing and housing security is a driver of developmental indicators like education, health and asset building. Mahila Housing Seva Trust started its pioneering work with the Slum Networking Program in partnership with the Ahmedabad Municipal Corporation. This is a model for the Swachh Bharat mission. MHT श्रमजीवी बहनों के लिए मॉडल संस्था है। हमने गुजरात में इन सिटू अपग्रेडेशन का भी काम किया है। राजीव आवास योजना के लिए बहनों के साथ रह के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ योजना का अमलीकरण किया है। हमने बाहर के राज्यों में बहनों के नाम पे ज़मीन दिलवाने का काम भी किया है। MHT subsequently organized 1,64,000 poor women across India and created basic facilities of water and sanitation to improve homes. પૂરે 40 से 40 જણે ખાતા ખોલાય એમએચટીમાંથી. એમાંથી અમે 21 રૂપિયા મેં ફાળો ભર્યો. એમાંથી અમને સગવડો મળી, પાણી, ગટર, પછી લાઇટના થાંભલા, પથ્થર બધું અમને એમએચટીમાંથી જ મળ્યું. The SNP received the Dubai Best Practices Award in 2006 and was televised internationally by CNN in 2014 under its Transformation series. The work horizon of Mahila Housing Trust is not limited to Gujarat. They have extended their wing across India to Rajasthan, Delhi, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand and Orissa. Over a period of 18 years, MHT has become a knowledge hub for habitat improvement. Mahila Housing Trust very importantly recognized that housing is not only a social security measure for poor women, but it is also a place for their work. It's their productive asset. So very recently we have also started working on climate change issues across South Asia, because we realized that inadequate housing and inadequate urban planning actually impacts the resilience of poor women in urban areas against climate change. MHT's first-hand experience and expertise is regularly sought by the international organizations like WIGO and HomeNet South Asia to build the capacity of its partners on habitat program across South Asia region. On the policy front, we have been appointed as a member on the Prime Minister's Task Force for Affordable Housing in 2008. We have been on the expert committee guiding the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, in which we have actually influenced the basic services for urban poor program, the Rajiv Awas Yojana,
and very recently the Housing for All program of the current government of India. MHT mobilized the community members and formed federation so they can interface with the urban local bodies like municipal corporation to procure better services for themselves. हमारे यहाँ महिला हाउसिंग ट्रस्ट एक अच्छा कार्य कर रहा है। उसका मुख्य काम यही है कि वह कम्युनिटी और भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच एक डायलॉग, एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस गेन किया है, कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया है ताकि उनका इस योजना में विश्वास जगा है, और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प कराई है। दीदी बताने लग गई कि वहाँ चलो हम फॉर्म भरते हैं और पट्टा बनेगा आपका। फिर पार्षद ने कहा कि हाँ पट्टा वट्टा नहीं बनेगा, जाओ बस्ती उठेगी। जब हम फिर वहाँ से वापस आ गए, फिर दीदी बोली वापस नहीं आना है, वहीं अड़ के खड़े रहना है, चाहे बने चाहे नहीं बने। हम कई बार गए, फिर वहाँ जब फॉर्म भरा फिर हमारा पट्टा आया। यहाँ जगह नापने के लिए आए, फिर पट्टा बना। गुजरात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ रह के बिल्डरों के साथ भी योजना का अमलीकरण करवाने का काम किया है। हाउसिंग फाइनेंस की अलग अलग मॉडल्स हम लोगों ने बनवाए हैं जिसके तहत बहनों को आवास मिल सके। For the success of any program, active participation of beneficiaries is encouraged, and they are given functional education training so that they can understand the process and making them responsible by taking informed decisions. प्रार्थी पहले मोटिवेट नहीं हो पाते थे, इस योजना का लाभ लेने में हिचकते थे, जिससे ये पर्सनल कन्विंस करने में इनसे प्रार्थी खुल के आए, योजना का लाभ लेने में आए। योजना के टाइम पीरियड जो हमारे योजना 2014-15 से पहले पूर्व होनी थी, वो समयबद्ध रूप से हुई। पत्रावलियाँ जल्दी लगी, उनके चेक कटे, लोगों के समय पे मकान बने। Cost sharing for every facility acquired is mandatory for beneficiaries so that they can understand the value of what is being done on their behalf, making it an inclusive project. Across India, MHT is organizing women into their own environment by forming a community-based organizations and city-level federation called Vikasini. The role of Vikasini is to advocate the cause of marginalized women with government, private players, and finance organizations like Seva Bank to access support for housing. और कंपनियों में ब्याज ज़्यादा था और यहाँ पर कम था, 1.5% से था, तो फिर घटते ब्याज से था, तो फिर हमने यहाँ पे लेना उचित समझा और यहाँ पर हमने लोन लिया। Under hand-holding support from MHT, Vikasini have influenced the urban plans of Ahmedabad city to make them pro-poor, representing to Working Committee for the Developmental Plan of Ahmedabad for 2020. मंडल से देखो बहनें एक साथ जुड़ी हुई हैं, कोई भी परेशानी होती है सब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं और अपनी कोई भी समस्या होती है एक दूसरे को बताती हैं, तो उसमें बहुत फायदा है। MHT is also a pioneer across India in housing finance literacy and consumer protection. They educate the vulnerable group of women how to protect their interests and rights while dealing with the housing finance institution, low-income developers, and government housing. After the improvement in basic living conditions, you need sustenance. And for that, you need enough earning. And for earning, you need skill. Karmika is a training institute for the skill practicing women, where training skill acquired is linked with the gainful employment. To further extend the help in employment of women, Mahila Housing Seva Trust has formed a company, as trust cannot make profit. Awas Seva Private Limited is a social enterprising for housing improvement in slums, acquiring work contract from the government to execute the various infrastructures and construction works. For these, MHT employs women from the focus area after proper training so they can earn. To make women financially independent, small entrepreneurship is always encouraged by MHT. Meet Girja Devi, residing at Saudha near Ghevra on the outskirts of Delhi. MHT has financed her a RO plant, from which
She is providing clean potable water in the surrounding area, earning from it. सबके लिए पूरा पड़ती है पानी और अच्छा भी है। उतना अच्छा तो गाड़ी में भी नहीं आती पानी जितना ये अच्छा पानी मिलता है। MHT वाले ने हमें हिम्मत दी, वही आगे आए तो हम आगे बढ़े, हमें तो कुछ पता ही नहीं। Under the ICP program, they conduct energy audit for the women members. After understanding the need and usage of member, MHT provides them energy efficient instrument for cooking, lighting, thus saving the money for the women. To save money, MHT has also encouraged them to form a credit cooperatives. Member of cooperative can get easy loans and they can open savings or recurring accounts. The cooperative society can contest the work tender and can provide the employment to the member. They get financial assistance and loan easily for being a cooperative society. पहले मेरा घर बिल्कुल गया गुजरा था, बिल्कुल ज़्यादा ही ख़राब था। पानी आता था घर में, बच्चे छोटे छोटे हैं, पोता पोती है, हम हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। फिर ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट से मिले, उन्होंने हमने लोन लिया। अब उससे लेकर हमने अपना मकान बनाया। अब बहुत अच्छा से हमें शगुन मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। अभी घर घर में टीवी है, मोटरसाइकिल है सब लोगों के पास। यानी महिला बहनों आई, महिला हाउसिंग ट्रस्ट वाले, तभी हमारे इसमें परिवर्तन आया एरिया में। अगर MHT की सहायता से ऊपर बन गया तो नीचे वाला रूम हमने किराए पे छोड़ दिया है, तभी वो भी थोड़ा पैसा आ जाता है, तो उसकी भी सहायता तो MHT की वजह से ही मिला है ये सब। जो हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, क्योंकि हम लोगों में इतना ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपना खुद का मकान खरीद सकें। और जैसे इनके MHT के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर मतलब घर हो जाएगा। सब काम का हमें पता लग गया तो हम क्यों रुके फिर यहाँ, इसमें रह के क्या करेंगे। फिर पार्षद के पास हम जाते हुए झिझकते थे, बिल्कुल भी डरते थे। अब पार्षद से बेझिझक जाते हैं, नगर निगम में भी जाते हैं, हमारा काम हम खुद कर लेते हैं। I think Mahila Housing Trust is very unique because though it's a grassroots organization, it is also a very professional organization. What we have done most importantly is that we have innovated, we have incubated, we have implemented, and then we have also upscaled, changing the lives positively of thousands of poor women. And we have become a knowledge hub which is jointly owned by poor women and professionals on the issues of habitat development. People at the helm of Mahila Housing Seva Trust are always on watch of how they can be more helpful to the women in need by keeping the trail of good work blazing.